Good afternoon. I hope you all can hear me and see me clearly. Hello, hello. Good afternoon. Good afternoon. Yes, voice okay. Thank you. At the Hero Zero to confirm होगा. प्रियांशु जी, we will definitely try. अगर किसी को कुछ issue आ रहा है voice में तो please write it down in the chat or else you can just write yes. We will share the intraday update, guys. IRFC holding. Let's just wait for our expert to join in. Rohit ji, you are not early. We are here. अजय जी चंदन सर अगले हफ्ते आएंगे and this week we have a session tomorrow at 4 p.m. on pre-budget analysis with our expert Dharmesh ji. Voice is clear. Thank you for the confirmation. Nifty morning call on fire. I hope आप सबने book किया हो. Just give me a second before we start. Okay. I'm just checking few things. Just give me a minute. Shivangi ma'am, I've sent you an invite. Mayurji, Shivangi ma'am will be joining us. Good afternoon, ma'am. I hope you can hear me. Good afternoon. Yes, I can hear you. Great. So I guess we are all set. You can start right now. You can take a minute. Yeah, sure. So good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. I am the community manager at Motilal Oswal. You see me daily hosting these sessions with different experts every day. So कुछ लोग हैं I can see जो पहली बार आए हैं आज हमारा आफ्टरनून सेशन है. We are gonna discuss Nifty Expiry है. And if the market is in good condition, we'll get some good trades from our expert Shivangi Sharda. Shivangi is a Nifty queen, a Nifty expert. उनको आप कल मॉर्निंग सेशन में भी देखेंगे. Now the question comes कि मॉर्निंग सेशन में क्या होता है. आफ्टरनून सेशन में भी फोकस अराउंड द डेरिवेटिव्स ऑप्शन ट्रेड एंड जो मॉर्निंग सेशन होता है उसमें भी फोकस मोर अराउंड स्टॉक्स एंड इक्विटी जहाँ पे हम आपको डिफरेंट ट्रेड्स देते हैं. स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, डिलीवरी. I can see summarizing today's morning session is profitable. Booked a profit of 36K. सुमा पवन जी, congratulations. सुबह के सेशन में अगर आप सबने प्रॉफिट बुक किया, थैंक्स टू मधुर सर. होप हमारे कल के सेशंस एंड आज की एक्सपायरी भी वैसी ही हो. राहुल जैसल, पैसा बिल्कुल बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में, बस कमाना आना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर हियर सो दैट वी कैन हेल्प यू. एंड इट्स स्टॉक मार्केट गाइस, प्रॉफिट लॉस इज समथिंग जो स्टॉक मार्केट के साथ में हमेशा आता है. सो प्लीज बिवेयर एंड आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही ट्रेड कीजिए. Also, already we have Shivangi ma'am with us. Also, before we move forward, I would like to mention कि मार्केट में काफी सारे स्कैम एंड फ्रॉड्स हो रहे हैं. लोग दूसरों के फोटोज, नेम एंड आईडीज को यूज करके लोगों से पैसा ले रहे हैं एंड देन उनके लॉसेस हो रहे हैं एंड दे आर स्कैमिंग देम. सो प्लीज go to your official advisor only and through official channels only. Don't fall for these people. Verify with your RMs. चाहे आप किसी के साथ भी ट्रेड कर रहे हो. This is a small suggestion, a humble request, so that we don't want our members to be a part and become a victim of these scams. मॉर्निंग सेशन भी यही होता है जहां आप जैसे आफ्टरनून सेशन में है वैसे ही मॉर्निंग सेशन में आप आ सकते हैं. एंड यस शिवांगी मैम, वी आर ऑल सेट. ओवर टू यू. यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड वी कैन स्टार्ट. Yes, thank you, Anuj. Thank you so much. So we've seen that Nifty has touched yet another lifetime high today. Just अभी कुछ minutes पहले ही Nifty ने 24,829 टच किया है. मतलब जिस तरह से मोमेंटम है सुबह के फर्स्ट 2 आवर्स में थोड़े बहुत स्विंग्स थे, बट उसके बाद जो बुल्स ने पूरी तरह से पकड़ा है इंडेक्स को, इट्स बीन रिमार्केबल. एक डेली फॉर्मेशन का जो एक रेंज था उसको ब्रेकआउट किया है और फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है काफी इधर.
So amazing momentum here. We hope that expiry के अभी आज के session में भी हमें वो मिल जाए. Momentum. So now, guys, I'm tracking, you know, calls right now. I'll just let you know the strike as well. But before that, yes, of course, thank you, Anuj, for bringing that up. कि काफी आजकल fraud वाले groups है. So guys, please don't fall for it and be careful. We do not ask for money online. हम WhatsApp करके आपको we don't ask for money. So yeah. All right, we are tracking 24,700 and right now, and इसका थोड़ा dip का wait करेंगे हम. But before that, we'll also discuss the levels. But 24,700 is what is on our radar. थोड़ा dip का जरूर wait करेंगे. Right now, it's around 90, 95. So let's come to the intra-hour levels, जो अभी एक घंटे में काम आएगा हमें for the next expiry, play. So we are looking at the recent lifetime high 24,830 levels upside में 850 तक हमारा level है 24,850 upside and support के लिए 24,700 will be important for this next 1 hour to play. Right now, let's talk about Bank Nifty. What's Bank Nifty doing here? Uh, So बैंक निफ्टी आज कुछ PSU banks है जो आज पिकअप करते हुए दिख रहे हैं. But overall, Bank Nifty has consolidated in a very narrow range from the last 9 sessions. So there has been some sort of momentum today, but clearly 53,000 एक बहुत strong hurdle बनते हुए दिख रहा है Bank Nifty के लिए. So 53,000 क्रॉस करने से एक फ्रेश लेग ऑफ मोमेंटम जो है वो फुल तेजी से स्टार्ट होंगे. But that is the immediate hurdle that we are looking out, and 52,250 का एक support है जो हमें ध्यान रखना है. Now, of course, there are some of the stock specific, sector specific action which have been quite good today. Now, if you talk about some of the cement space like India Cement हो गया, यहाँ पे काफी अच्छा एक्शन है आज. स्टॉक it's up by around 8% and the kind of triangle breakout that the stock has given और follow up भी इतना strong है. RSI भी positive divergence दिखा रहा है. So this clearly shows that momentum will continue here. अगर आप इसका long term structure chart भी देखो, if I just make it weekly structure also, from the last 6 weeks, it's continuously moving. Bulls have not given up at any point. थोड़े भी declines में हम देख रहे हैं कि buying convert हो रहा है. So India Cements is very strong counter to look out for. Next, I'm liking Bharti Airtel. Daily frame में अपने एक बहुत ही consolidative band से निकला है Bharti Airtel, the stock. So this is also looking, quite positive. We are looking at 1550 as the next targets over here for Bharti Airtel. तो 1550 के लिए हम इसको ध्यान रख सकते हैं. And let's come back to Nifty now. So I'm tracking 24,700 call right now. It's trading right about 100, 110. But मुझे लग रहा है कि हमें एक strike above लेना पड़ेगा because Nifty is moving in momentum and काफी अच्छा हम play out कर सकते हैं. So 24,750 is what we can track right now. So right now it's trading at 50. तो हम इसको try करते हैं कि we can get this in the range of 40 to 45. 40 to 45 के range में हम try करेंगे कि 24,750 का call हमें मिल जाए. And we will play this for the next 80 and then 100 levels. But फिलहाल track करते हैं, अपने buying range में आने देते हैं stock को, फिर ही हम इसमें comfortable होंगे. Meanwhile, yes, thank you Prashant for pinning it. Meanwhile, हम देख रहे हैं कि there are a lot of questions. I will be, tracking Nifty and taking some of the questions. Nifty में momentum आएगा तो I maybe, will shift there. But yes, I think Anuj, let's just take
4-5 questions और फिर हम you Sure. know So I'll just scroll up and go to the top. What's your view on Titagarh? Titagarh. Okay, so let me just go to Titagarh. Although सारे ही rail counters have done very well in the last 2 months, but थोड़े बहुत profit booking जरूर है. Titagarh, I would say that there is some sort of profit booking, so one can exit in this stock. But the better stocks in this space is suppose RVNL. तो आप अगर रेलवे में एक्सपोजर लेना चाहते हो तो आरवीएनएल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ऐसे स्टॉक्स के साथ रहो जो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है एज कंपेयर टू दी अदर प्लेयर्स. बट यस, रेलवे बजट आ रहा है तो थोड़े बहुत उसमें एक्शन रहेंगे. बट टीटागढ़ इज स्लाइटली ऑन द वीकर साइड, तो ये आप थोड़े शिफ्ट कर लो सेक्टर स्पेसिफिक में. राइट. ओके. Next. Nifty 24,750 call is still near 50 53 levels. इसमें थोड़ा dip हम wait करेंगे because it's been in this consolidative band. तो यहाँ पे थोड़ा time decay अगर हमें मिल जाए तो हम बहुत comfortable हो जाएंगे. Nifty is right now at 24,800. So एंड हम देख रहे हैं कि निफ्टी टिक बाय टिक इज इंक्रीजिंग अगर 1 मिनट का आप टिक देखो, एंड बट द कॉल इज नॉट इंक्रीजिंग इतने स्पीड में. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाइंग रेंज में आ जाए. वील वेट फॉर लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स मोर. अगर नहीं आता है तो हम इसी में ट्राई करेंगे कुछ एंटर करने का. बट वील जस्ट वेट. या अनुज, next question. One, will BPCL cross 319, buying at 305? Okay. BPCL. BPCL cross 319 किसी ने लिखा है. Will it cross? अच्छा, 319 तो आज का हाई ही है and it's just 3 points away. So it's not much of a brainer here. चार्ट ओवरऑल अच्छा है तो ये क्रॉस तो कर ही जाएगा, बट थोड़ा स्लो मूवर है, so one has to have little patience. Okay, Nifty is now above 24,800 और वो कॉल गया है 60. Okay, so clearly momentum जो है वो अब नहीं रुक रहा है. So guys, we'll enter 24,750 call. Um, right now it's 70. Okay, I'll just tell you the stop loss as well. Okay, we can enter the 24,750 call near about 70. उसका आप stop loss लगा लो 55 का and target will be 100. So guys, we have already shared in the chat. Nifty 24,750 call, buying range 70, stop loss 55, target 100. Okay, Rakhi, आपने और फार्मा पे लिखा है. I'll just take stocks question. Suraj is also asking, Vipul is also asking. I'll just take stock queries in in some time. Nifty के call को हम track करते हैं. Okay, it's now around 78 right now. तो एक बार खाली हम इस trade पे focus कर लेते हैं and then after 5 minutes I think we'll take up Mayur, Mangesh. Just wait for another 5 minutes. Right? So Nifty call is at 81 right now, 83, 85, doing good, 87. So guys, momentum है काफी. Nifty is comfortably above 24,800. And सुबह का जो swing था, जो जिस तरह से दोनों तरफ swing थे, upside और downside, अच्छा है कि अभी वो swing नहीं मिल रहा है, नहीं तो काफी हमारे लिए tricky हो जाता hero zero play out करने का. It would have been riskier also. So it's good that we are getting a good smooth swing up move right now. Ma'am, we are getting a lot of queries saying कि 70 में entry मिला ही नहीं.
Okay. And at the same time, we are getting a lot of messages ki they have already booked at 781, they bought at 73, and they are already churning. Okay. So guys, see hero zero में क्या होता है? Option movements are quite fast. Even in trending days like these when Nifty is at lifetime high levels, तो आप imagine कर सकते हो कि option swings जो है वो काफी fast रहेंगे. So you'll have to be very agile. You'll have to be very quick in kind of doing the option trades. और आपको swiftness भी उतनी ही रखनी पड़ेगी in terms of entering and exiting the trade. Right now it's at 83, 84 right now. Ma'am, any re-entry suggested? Re-entry तो नहीं suggest किया जाएगा because right now the trade is at 85 and जो comfort हमें 15 रुपए पहले मिल रहा था वो comfort अभी नहीं मिलेगा. In If Ramji, the target is 100. I saw you asking a couple of times. So the target is 100. You can check the pin message. And also, जो हम suggest करते हैं हर बार कि you can keep on churning your profits. someone's writing got re-entry at 72, that's good. अगर आपको 70 के आसपास का re-entry मिला है that's good because right now it's at 85. तो आप profit में हो, आप comfort में हो, the price level is much higher than that. So no problem in that. 88, 90. The call is at 90 right now, right? जिन्होंने अभी भी book नहीं किया, they can book partial profits. Imran ji booked at 88. Congratulations, Imran ji. Imran, congratulations. He's booked. Mayur has written India VIX is up today. Now, see Mayur, what happens? India VIX एक काफी lower zones पे hover कर रहा है from the last many weeks. हम देख रहे हैं कि from 13 June onwards from here it's been in a very narrow range. तो अगर यहाँ पे अगर India VIX is up by another 2 or 3%, it's still below 15, which is quite comfortable. So अगर यहाँ पे इंडिया विक्स 18 के अबव जाएगा तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल होंगे या थोड़ी बहुत सेंटिमेंट्स चेंज होते हुए दिखेंगे. बट राइट नाउ वी आर कंफर्टेबल एंड इंडिया विक्स जो थोड़ा सा भी हाई हो रहा है इट्स जस्ट क्रिएटिंग मोमेंटम एट द हायर zones. So no problem in the higher India VIX because it's slightly higher, it's not shot up, right? So this actually बहुत जन का ये क्वेरी रहता है कि इंडिया विक्स इज हाई, मार्केट्स आर आल्सो एट लाइफ टाइम हाई, तो ये कैसे हो रहा है? तो इंडिया विक्स बहुत हाई नहीं है गाइस, 15 के नीचे ही है. अब जब बेस ही इतना लो हो गया है तो वहां पे अगर 2-3% अगर अप है सो इट्स ओके, बट व्हेन द इंडिया विक्स इज अप बाय 6-7 और मोर देन दैट परसेंट तो वहां पे थोड़ा बहुत हमें डिस्कम्फर्ट मिलेगा इन द बाइंग साइड. But yes, coming back to the call, it's at 88 right now. Momentum थोड़ा बहुत build हो रहा है यहाँ पे. Good part is that it's sustaining at these price levels. ज़्यादा swings नहीं है, but if you can start booking your profits also. Partial आप book कर सकते हो, फिर trail कर सकते हो आगे. But recommended यही है कि आप book कर लो profit अभी. Nifty has shown a good momentum, right? So अब time decay भी play out होगा because we are approaching the expiry in the next 40 minutes. So guys, book कर लो, book करते रहो, right? Guys, entry right now is not suggested, and I can see some messages कि जब आपने strike बताया तभी enter कर लिया था. That was a pretty risky move, but I guess जब हमने strike बताया तब it was around 55, तो आपको काफी अच्छा profit book हुआ होगा. And I can still see कि there are some people जिन्होंने buying order पे 70 लिखा हुआ था, that's why उनका trigger नहीं हुआ. So that is the thing, guys. When we say specifically buy at this, तो हमें एक trigger वैसे रखना होता है. When we say buy near 70, near 72, तो 2 point ऊपर नीचे you can adjust. तो जिन लोगों ने adjust किया थे book profit, we have a lot of people जिन्होंने काफी सारा profit भी book किया है. So no worries, guys. Imran Try has written our profit. best. Imran has written, sorry Anuj to cut you out. Imran has written profit with morning. Madhur sir के call से thank you Stockamo, and even you've made profit in this also.
So waiting. Great, great, great. It feels really great to see these messages, guys. Hope majority of you have booked profits today. So, ma'am, I Right. guess do we have any other call for Nifty? So see, right now the call is at 86. ठीक है, तो अभी यहाँ पे री एंट्री का तो नहीं मैं बोलूंगी, because now it's already up like a quite a bit, and Nifty is at new lifetime high. एक नया lifetime high बना है 24,830 का, फिलहाल भी लाइफ हाई पे है, but the call is at 88, right? 89 वही जोन पे है. सो अब जो वो मूवमेंट है वो अब मिल चुका है. So now it's difficult for like a re-entry here and then getting another 15-20 points movement. The call is at 9600 right now. Okay, so the targets have been achieved. 106 का एक flick मारा था, but it settled at 100. Right now it's at 100. सो आप देखो, एक ही फ्लिक में, एक ही सेकंड में 10 रुपीज का स्विंग्स हो रहा है. इट जस्ट टच 106 एंड नाउ इट्स एट 96. सो हीरो जीरो इज लाइक दिस गाइस. बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट होता है यहाँ पे जो स्विंग्स, जो मूवमेंट्स होते हैं. So one has to be very swift, one has to be very quick with this. But I'm so happy to see that so many of y'all made good profit today. And thank you so much guys for such warm comments. काफी अच्छा लगता है ये सब पढ़ के आपके कमेंट्स को. Thank you ma'am, you are the best. Thank you so much. I can see some names who regular are Satosh ji, Sunny ji, Sai Srisha ji. These are new people who have joined us, Puneet Shah. So, ma'am, I guess since we don't have any new trade, I guess we can, give the BTST and probably take some stock queries and then end the session. Yes, definitely. So BTST के लिए I will just now take out the trade. Just give me a minute. Okay, as I said, Bharti Airtel and India Cement are two stocks which are looking quite positive for BTST also. One can see this. कुछ IT पैक में भी एक काफी एक्शन है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं. As index has been led mostly by the IT only. तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है IT मिड कैप स्पेसिफिकली जो अभी भी इसमें काफी अच्छा मूवमेंट हो सकता है. सो वन कैन लुक एट बिरला सॉफ्ट फॉर दैट मैटर. यहाँ पे एक अच्छा स्विंग है. ऑल्दो नैस्डैक में जरूर ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े बहुत वीकनेस थे, बट आवर IT stocks are quite strong. So one can look for Birla Soft. India Cements will be the preferred, first pick cement space में से, and then we have Birla Soft as the next pick. So India Cement, I think we've already discussed यहाँ पे, अच्छा खासा एक movement हमें capture हो सकता है. Even for tomorrow, it's looking quite positive. So one can look for this stock at around 400 levels as the target, and 325 would be a stop loss. And the second would be Birla Soft. इसको भी आप देख सकते हो 850 के अराउंड के टारगेट्स के लिए. 850 थोड़ा पोजिशनल है, बट फॉर टुमारो you can look at 800 odd levels. फिर 800, if one is taking positionally तो 850 targets है, but for BTST the target will be 800 and stop would be 728. तो ये दोनों स्टॉक्स आप रडार पे रखना, ध्यान रखना. I'll just I think quickly take up a few questions, then Anuj, time तो है हमारे पास थोड़े बहुत. Yes. Okay, someone's asking, ma'am, Deshik is asking, ma'am, what indicators do you use for option trading and prediction? So ऑप्शन जब आप देख रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंडरलाइन को अच्छी तरह से स्टडी करो. जैसे हम निफ्टी के ऑप्शन को देख रहे हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम निफ्टी को अच्छी तरह से स्टडी करें. एंड while doing options you have to also keep in mind the time decay factor. यानी कि अगर निफ्टी जो है वो जिस स्पीड में मूव कर रहा है,
you will always have the option draining, one part of the option draining, because वहाँ पे time decay चल रहा है. तो दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली ऑप्शन प्राइसिंग में, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम डीके. इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द अंडरलाइंग, बट टाइम वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एज वी अप्रोच नियर द एक्सपायरी. तो ये हमारे लिए बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा चैलेंज होता है, दैट टाइम डीके इज ऑलवेज वर्किंग अगेंस्ट अस. तो अगर अंडरलाइंग में बहुत स्ट्रेंथ है, तभी हम ऑप्शन बाइंग के लिए प्रेफर करते हैं जाना, राइट. सो like I said, 24,800 के ऊपर अच्छे से सस्टेन करा था, तब हमें कन्विक्शन आया और तब हम कॉल पे एंटर किए, एंड देन वी कैप्चर्ड 20-30 points movement in Nifty in the in the matter of 5 to 10 minutes. So ये आपको देखना है. Now to understand underlying, आपको technical levels देखने हैं, काफी सारी चीजें हैं technical में, derivatives भी काफी सारे data points है that you need to look out for. But of course स्टॉकहोम पे हमारे काफी सेशंस होते रहते हैं, so you can join one of those sessions, you can learn, right. And I guess, ma'am, next we can take Hal. okay, I will just look at HAL. Defense space have seen some sort of profit booking, but आप देखो अगर HAL in the last 1 month has moved quite a bit, और पिछले इनफैक्ट 3-4 महीनों से, जब से इलेक्शंस का रिजल्ट आया है उसके बाद से ये रैली कंटिन्यू हुआ है. एंड राइट नाउ बिकॉज ऑफ द बजट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट शिफ्ट ओवर हियर, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बने रह सकते हो. स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग वेरी कंफर्टेबली. सो 4,950 can be your support अगर आप पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो तो. एंड इफ यू आर अ ट्रेडर, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार निकल जाओ, थोड़ा बहुत और सॉफ्टनेस हो सकता है. एंड एनी वे वी आर एंटरिंग टू बजट, तो ये सारे स्टॉक्स में ज्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पीएसयू सेक्टर में है, तो ऐसा. ओके, Nirmalijit is asking, hi Shivangi ji, can you suggest F&O trade for budget day quick momentum? Yes, हमने बजट के लिए बहुत सारे स्टॉक पिक्स जो है वो रडार पे रखे हैं. So do check out our channel and you will find those stock picks over there, right. ये एक zero expiry call session है, तो I won't mix the two. कोचिन शिपयार्ड काफी बार आया मैम. Okay, I'll just take up Cochin Shipyard as well. Cochin Shipyard भी थोड़े बहुत profit booking देखा है हमने. But if we look at the weekly structure of this stock, so there is some sort of negation over here. तो थोड़ा बहुत यहाँ पे consolidation हो सकता है, but overall stock is not negative per se. तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप बने रह सकते हो, बट अगेन थोड़े बहुत it can drip down to round about 2600 levels. Is there anything we can do in Nifty? Ambience is asking. Nifty, the trade has been captured and अच्छे से हमने वो capture कर लिया, अब over भी हो गया वो trade. Nifty is back, below 24,800. तो अब हम 3 भी बच गया है, अब हम हीरो जीरो पे नहीं एंटर कर रहे हैं, वापस री एंट्री नहीं कर रहे हैं. This was all for the day, that's, and we've captured good, people have made good money, so I think that is it for I this. guess we will end the session. As one comment, which made my day. I would like to read that. It's from Imran Mondal ji. I guess ये 2 महीने से हमारा regular है, if I'm not wrong. उन्होंने लिखा है, I'm a government employee. Since I don't have time to do market analysis, I have been relying on Stockholm's research, and it seems that trading signals are quite accurate. बहुत सारे heart emojis. Thank you Stockholm experts, and thank you Anuj sir. Thanks a lot guys for messages like these. It makes our day, and this is the support which we are looking for. And this movement
motivates us to go through some bad phases also. So thanks a lot, and thanks a lot, Shivangi ma'am, for a profitable and wonderful session. And hope to see you soon. Actually, see you tomorrow morning. You will be a part of the morning session tomorrow at 9:30. So जितने भी लोग stocks की query, budget stocks पूछ रहे थे, we will be focusing about that on tomorrow's morning session. So don't forget to join. It's at 9:30 a.m. and you just have to come on Stockholm event already listed hai, and you can join. Thank you everyone. Thank you Shivangi ma'am. All right. Thank you so much. Have a good day ahead. Sure, Deshika ji, you can connect with us on LinkedIn. You can just search Arun Sharma Motilal, or you can just search Shivangi Sharda Motilal, and you will find. Thank you.